And we are live. Okay, so welcome back to the. Oh, sorry. So, welcome back to the Chit Chat with DABS once again, and after long 2-3 months, and we are back with I think, the best episode of the reactions part. Like, this was like, I'm so excited to do this one, the House of the Dragon, and of course, with Garima ma'am. Like, hi. Hi, Hi, Garima. thanks for having me again. हाँ हाँ सो द बेस्ट पार्ट इज कि लाइक हमारी फ्रेंडशिप जीओटी से हुई थी तो आई थिंक इट्स लाइक मतलब हमारा बॉन्ड लाइक द शो हैज बीन लाइक द ग्लू लाइक मेजर ग्लू ऑफ आवर रिलेशनशिप तो Doctor. लाइक वी ऑलवेज लव टू हाँ वी ऑलवेज लव टू डिस्कस लाइक जीओटी वेन एवर वी गेट टाइम एंड फिर जब हाउस ऑफ द ड्रैगन आया तब भी लाइक again we were on long talks, messages, tweets, and everything. So we decided to make this podcast. Like we'll give you our review, collective review, and also if you want to like listen more about Garima's point of view, then there's a podcast link below in the description, and you can just go there and hear her point of view. है ना? आपका ही point of view है ना Yeah, पूरे उस पे? yeah, I've हाँ just interpreted thoda bahut, right? हाँ ठीक है तो वो वाला कर लेना तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन सो मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देती हूँ लाइक आई एम द पर्सन who has watched only shows like even GOT only shows and the HOTTT but गरिमा मैम ने सारी बुक्स भी पढ़ रखी हैं शोज भी देख रखे हैं एंड ऑफ कोर्स हमारा जो ट्विटर वाला रहता है मतलब अपनी तरफ से रिसर्च एंड ऑल दैट वो तो हम सबने कर रखी है ठीक तो लाइक वी कैन कनेक्ट लाइक एज एन ऑडियंस यू कैन कनेक्ट टू वन ऑफ अस है ना ऐसा हो सकता है हम्म। Right, right. चल चलो मैं स्टार्ट Yeah, and करती हूँ फिर तो I've आई read हैव the मेड books क्वेश्चन and I watched the shows. Hmm. हम्म राइट तो मैं स्टार्ट करती Oh, हूँ nice. तो we'll start with the our first impressions आपका फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा था लाइक द Okay. ट्रेलर टीजर एंड द बुक लाइक व्हाट वाज योर फर्स्ट इम्प्रेशन So like going back to season 8, so after season 8 happened Game of Thrones, so I kind of like it was very bad, and especially like I was very invested in the show, so it was very bad. And so it was, yeah, like there's this memes going around, right, that it broke your heart kind of. And so you don't want to go back to that world, but so I knew about that this prequel is on cards, and some news here and there, but I was not that invested. When the teaser came out, then I was like, okay, it looks promising, but it like I will say that it was only after the trailer that I was like, okay, yes, like this is actually something which I can uh, invest myself again into. So it's worth the efforts. And then like with the first episode itself, I was completely like, I loved it. I loved how they portrayed. Like, I think it had that GOT vibe and it reconnected you to that world. And then also there were these memes like, oh, uska hai na Michael Scott's ka, कि I'm ready to get hurt again. Those were going on. And with the first हाँ episode, everyone was like that. Okay, now everyone is ready to get hurt again. Yeah, so I think that was my first impression that okay, yes, I'm back in Westeros, and it was good. Like I really liked the first episode. I think it's one of my top episodes. नाइस नाइस हाँ तो मेरा मेरा भी सेम वो डिसअपॉइंटमेंट वाला चल रहा था फेस आई थिंक मैंने टीजर देखा था देन आई वाज एक्साइटेड बट मुझे इतना पता नहीं था लाइक कब तक आएगा तो वो होता है ना कि ठीक है हाँ. आएगा तो ठीक है ना फिर फिर आ गया तब भी मैं ऐसे लेट बैक सी थी मैंने कहा ठीक है फाइन आ गया फिर उसके बाद वो तो मेरा ऑफ कोर्स मैं फॉलो कर रखा है ना वो जीओटी वगैरह ट्विटर पे तो आता रहता था कुछ कुछ Hmm. बट आई कुडंट कनेक्ट क्योंकि मैंने मतलब ना मैंने ढंग से मैंने टीजर देखा था ना मैंने ट्रेलर देखा था तो लाइक इट वाज लाइक मतलब एक वो होता है शैडो सी थी फिर देन आई डिसाइडेड कि ठीक है मैं देखूंगी
तो लाइक मैं देखूंगी तो साथ में देखूंगी। सॉरी एक सेकेंड। तो दिस ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइक मैंने हम्म। सारा साथ में बिंज वॉच किया है, मतलब सारे मैंने वेट किया है एंड तक कि जब तक वो आ जाएंगे एपिसोड सारे तो मैं एक साथ देखूंगी। आई थिंक आपने वीकली देखा था ना, वीक मंडे पे टू देखा है, मंडे। मंडे मॉर्निंग रिचुअल वाज हाँ बैक। वो मैंने जीओटी के टाइम किया था, मैं बहुत हर्ट हुई थी। सुबह हम कितने 6 बजे आता था Oh ना। God. हाँ, ओ and you गॉड। had to watch it because everyone was spoiling it in the GOT के time तो. हाँ They were like, there was no और ऊपर, option, like you have to. हाँ हाँ. हाँ, एक तो उठ जाओ फिर देखो, यू हैव टू कीप योर फोन असाइड, क्योंकि साथ में लोग लाइव ट्वीट कर रहे होते थे ना कुछ भी लाइक। I हाँ know. तो मतलब आगे पीछे हो कोई तो लाइक स्पॉयलर्स मिल जाएंगे या हम किसी को स्पॉयलर्स दे देंगे, ऐसा रहता था। Right, right. तो आपने इस So बार भी ऐसे ही किया सुबह उठ के? मैंने सुबह उठ के देखा रहे, मतलब मैंने फर्स्ट एपिसोड लेट देखा था, so that was like I guess मंडे की रात को देखा था. क्योंकि फर्स्ट हम्म एपिसोड मतलब उतना, लेकिन फर्स्ट एपिसोड के बाद भी आई एम टेलिंग ना, मुझे फर्स्ट एपिसोड से ही बहुत अच्छा लगा. So then next episode हम्म onwards, I was like waiting for Monday to come, like finally हम्म to watch that episode. हम्म It was good. And then ये तो हम्म। लीक हो गया था finale. हाँ कुछ कुछ एक दो एपिसोड्स लीक भी हुए It थे, got मैंने leaked. देखा था। Like leak हाँ हुए थे, but like the finale episode was actually leaked. मतलब जैसे पहले भी कुछ न्यूज मिली थी तो it was like it was not available yet, but finale was अच्छा। available. ओ बेचारे। चलो ठीक है, तो फिर हाँ मेरा तो यही था कि अगर हर्ट होना तो एक साथ हर्ट होंगी, लाइक हर वीक मतलब वो हो जाता है ना, वेट करते रहो एंड वो वाला चीज। Like, I want to ask you a question on this. So, like, since you watched it as a binge, and there were many like time jumps, which which when we हम्म were watching the हम्म show, like there was a major discussion going around कि इससे time हम्म jumps हो रहे हैं, तो मतलब it's breaking the flow of the show kind of. तो तुमने जब binge किया, जैसे हाँ हमने तो episode weekly देखा, तो हम्म still it was able to connect क्योंकि एक ही episode देख रहे हो. हम्म बट बिंज में like did that हम्म। affect you in a way, जैसे फिफ्थ एपिसोड एकदम से खत्म हुआ एंड डायरेक्टली सिक्स्थ में रनेरा हाँ चेंज हो गई, तो मेरे में ना तो एक व्हाट वाज बहुत दैट? गंदी आदत है। मेरे में एक बहुत गंदी आदत है, मैं क्या करती हूँ, मैं ना पढ़ लेती हूँ नीचे नीचे, एक लाइन लिखी होती है एपिसोड की। हाँ ठीक हाँ, है। सिनॉप्सिस तो सही. आई हैव दिस बैड हैबिट ऑफ रीडिंग, मतलब हमेशा जब भी आई स्टार्टेड आई अ ऑल्सो डू सीरीज और दैट. व्हाटएवर। हाँ तो क्या हो रहा था, आई थिंक जब वो स्विच हुआ ना, जब छोटी रनैरा से दे स्विच टू द बड़ी रनैरा, तब मैंने मतलब आई थिंक जब वो चल रहा है शुरू में, आई वाज लाइक हु इज दिस, क्योंकि आइकन में भी शी वाज अ डिफरेंट अच्छा, पर्सन। हाँ तो फिर देखा. आई वाज कंफ्यूज लाइक इज देयर अ न्यू पर्सन कमिंग टू द नेक्स्ट एपिसोड या कुछ ऐसा। फिर देन आई रियलाइज्ड कि ओ 10 years हैव पास्ड, क्योंकि वो बीच में अमेजिंग. बोलते भी हैं कि लाइक वो दैट दैट गाय ना जो हैंड ऑफ द किंग होता है, दैट स्ट्रॉन्ग ऑटो. जो बना अच्छा, देते हैं। स्ट्रॉन्ग. नहीं, वो बोलता है ना उसको हाँ. कि यू हैव लॉयली सर्व्ड मी फॉर पास्ट 10 years, ऐसे ऐसे। तो हम्म. देर आर मेनी रेफरेंसेस इन दैट एपिसोड दैट मेक्स यू थिंक कि यार 10 years have passed। तो इफ यू आर बिंज वॉचिंग तो लाइक इट्स इजी टू कनेक्ट, अगर लाइक इफ आई हैव लाइक 1 week का ब्रेक तो आई माइट हैव लाइक कि क्या हुआ था पिछले एपिसोड में, और ऐसा मे बी अच्छा, मेरे साथ हो राइट. जाता है ऐसा। Okay, okay, okay. Got it, got it. So like it had that binge factor to it. हाँ, हाँ हाँ I हाँ think I think it could be either. मतलब वो शो ऐसा है कि आप हम्म, उसको binge भी कर सकते हो and हाँ watch it weekly as well. हाँ 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 हाँ। तो मुझे तो सही लगा बिंज करना, क्योंकि लाइक उसमें ऐसा हो गया ना कि एक ही बारी में सारा मतलब खत्म हो गया था No, स्टोरी I लाइन। also wanted to binge हम्म because it's actually very, it's a torture to हम्म, wait for that episode, right? Like हाँ मतलब कि एग्जैक्टली। एक हफ्ते you are just thinking, and like I get too much involved in that in the show, like especially Westeros and हम्म all. It gets very हम्म। irritating कि weekends में भी हम thinking Monday आए, मतलब ऐसा कभी हो सकता है कि कोई सोचे कि Monday आए और when it was on, okay Monday आए. पर यूएस वालों के लिए कितना सही है ना, उनको रात को 9 बजे को मिल जाता था हाँ लाइक ना, संडे नाइट। हाँ तो दे वही. कैन मेक
late night, like Sunday night, we are watching it जो भी राइट नहीं है. एंड वी हमें वैसे भी प्रॉब्लम है देखो सुबह देखो ना तो रोशनी हाँ रहती है ये रहती है तो टीवी पे इतना अच्छा भी नहीं लगता रे मतलब हाँ तुम हाँ कितना ही हाँ कर्टन डालोगे तो दैट इज हाँ. लाइक दैट वाज ट्रू ट्रू समथिंग ट्रू ट्रू. वो रात हाँ, में आई देखने ऑल्सो में ही रिमेम्बर. मजा आता है बट यू कैन नॉट वेट फॉर हाँ द नाइट तब तक स्पॉइल हाँ हो जाओगे हाँ हाँ हाँ. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. तो जब मैंने जीओटी स्टार्ट किया था, आई थिंक तब ना 4 सीजन्स आए थे जब मैंने स्टार्ट किया था जीओटी. सेम मेरा भी तो मुझे याद है, तो 4 सीजन जो मैंने बिंज किए, लाइक वो होता है आई ना, नो लाइक मतलब आई आई थिंक गेस एक 1 वीक वीकेंड या में. 3 दिन में हाँ हाँ ठीक है. फिर उसके बाद वो हो गया था अपना कि 5th सीजन आएगा, 6th सीजन आएगा. इतना टॉर्चरस काम था वो, मतलब जो वेट करना, गॉड फिर हर एपिसोड के बाद वो सारी देखना, ट्विटर पे जाके, इंस्टा पे जाके सबके पॉइंट ऑफ व्यू, थ्योरी. फिर आई थिंक मे बी दैट स्पॉइल्ड वो. मतलब इतनी लोग थ्योरीज बना देते ना कि तुम ऐसे हो जाते हो कि व्हाट इफ वन ऑफ क्या देम ट्रू, होगा मतलब इज ट्रू. हाँ, तो हाँ वो वाली चीज में आई वांटेड टू अवॉइड वो वाला चीज इस सीरीज के लिए, क्योंकि मैं बट इतना बट इमोशनल नाउ यू वोंट बी इन्वेस्टमेंट. एबल टू नाउ यू वोंट बी हाँ एबल टू विद सीजन 2 क्योंकि नाउ यू विल गेट स्पॉइल्ड क्योंकि हाँ. अभी तक तो इट वाज ओके बिकॉज़ यू डिडंट नो कि कौन क्या है बट अभी यू विल गेट हम्म. स्पॉइल्ड नेक्स्ट सीजन से यू विल गेट स्पॉइल्ड हेलो सॉरी कुछ इंटरनेट इशू हुआ एक सेकंड कट गया, फिर से बोलो. मैं बोल रही थी कि नेक्स्ट सीजन से यू विल गेट स्पॉइल्ड मतलब यू कैन नॉट डू दैट यू कैन नॉट वेट फॉर इट टू पूरा शो आ जाए फिर बिंज करो क्योंकि अभी तो यू नो द हम्म. कैरेक्टर्स ना तो तुमको पता चल जाएगा कि ये हो रहा हाँ. है हम्म. क्या एंड ऑल्सो व्हाई वी आर वेयरिंग ब्लैक एक मिनट. हाँ, वी आर वेयरिंग ब्लैक फिर राइट से बोलो. हेलो हाँ 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 हाँ. एक मिनट, कट रहा है, एक सेकंड रुकना, होल्ड करना. मैं रिजॉइन करूँ क्या मे बी मेरा इंटरनेट इशू है हाँ आप बेटर ठीक है. हाँ आप बोलो. हाँ हाँ इट्स ओके कंटिन्यू मतलब ठीक है हाँ हाँ. आप क्या बोल रहे थे ब्लैक्स वाला बीच में? आई एम सेइंग दैट वी आर वेयरिंग ब्लैक फॉर अ रीजन राइट हाँ हाँ हाँ. विल रिवील लेटर. ओह ओके हाँ ओके तो अच्छा ठीक है. तो वी हैव डन आवर फर्स्ट इंप्रेशंस, वी हैव डन की व्हाट इट फेल्ट टू लाइक बिंज वॉच एंड वन ऑन वन. ठीक है. नाउ विल कम टू द एक्चुअल शो. Like we'll talk about characters, storyline, and the difference between the books and shows. Like how did you feel कि कुछ चीजें चेंज हुई हैं, एंड how I'll tell कि कुछ चीजें होती जो मुझे पता चली. तो like how would it have like made my, मतलब पूरा थिंग में भी मोर, मतलब वो होता है ना कि कनेक्शन वाली चीज ज्यादा हो जाती. हम्म, वो ठीक है. स्पॉइलर अलर्ट तो हम, हाँ स्पॉइलर अलर्ट भाइयों और बहनों, सब सबको. और चलो तो स्टार्ट करते हैं. अब यहाँ से ऑफ कोर्स स्पॉइलर्स आने ही है, लाइक यू कांट अवॉइड देम. वी विल तो कवर सीजन 1 के स्पॉयलर्स राइट हाँ. मतलब हम्म. शो देख के देन यू कैन वॉच दिस हम्म. एट हाँ, स्ट्रीमिंग like it's a reaction video, तो I think हाँ people will watch it with caution थोड़ा सा. हाँ But if you are not watching it with caution, तो we are already telling you. yeah हाँ चलो ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं हम शुरू से. तो मतलब ओवरऑल अगर आप शो देखो, like if you are like the first person of course watching the show, would you like recommend it to someone वैसे, और like how would you recommend it like in one line, अगर किसी को बताना okay हो कि why should so you like watch this if show. that person has not watched GOT so I'll be like what are you हम्म. doing with your life you have to watch you I think it's very important to watch this show. हाँ. I had this I won't say whatever you can say that, but I used to be like that. That what are you doing with your life? हम्म. You will not watch GOT. I think like obviously what हाँ. happened afterwards was a massacre, but tab tak like obviously one of the best
हाँ. Right. Oh, come on, that you have to watch it, and it's really Hmm. interesting. And Hmm. for someone who has watched GOT, I'll say that I understand Hmm. the heartbreak you had, but like Hmm. this would be that wo, the the way to sorry, I got lost. So I'm saying that हाँ, hello. आपने बोला. बोलो कंटिन्यू. That for someone who yeah, like जिसको HOTD अभी देखना है, so for that person, I said, it हम्म. is like your it can हम्म. which was season 8. ठीक है. आपका ना कनेक्शन थोड़ा सा ब्रेक हो गया था वैसे, बट हाँ मतलब कहीं इन कंक्लूजन की देखना चाहिए सबको, राइट? ऐसा. हाँ. And my internet is behaving very weird today. But like yeah, basically जिसने हम्म. like I'll just repeat जल्दी से जिसने नहीं देखा है what are you doing हाँ. with your life? Like जिसने देखा ही नहीं है हाँ. GOT and ये and जिसने GOT देखा है हाँ. and House of the Dragon नहीं देखा है for them it's like like this will be a way to mend your heart which was broken by season 8. या सच में. तो हाँ, मतलब मेरा भी यही था कि लाइक पहले तो मैं ऐसी थी कि पता नहीं कैसा होगा, एंड आई डिडंट नो कि हाँ, मुझे पता था आई थिंक ये टारगेरियंस के बारे में, बट आई डोंट नो लाइक व्हाट दे डिड टू डेनेरिस ना, बुरा सा लग रहा था इनके हाउस के लिए कि लाइक पता तो है एंड में Hmm. जाके उसके साथ क्या होना है ना. तो फिर मतलब फिर से मैंने सोचा कि क्यों ही देख के मतलब कनेक्ट द डॉट्स करके सैड होना है, मतलब कि कि इतना लैविश, लाइक दे हैव दीज ड्रैगन्स, उनके पास आयरन थ्रोन है, दे हैव दीज गोल्ड, मतलब गोल्ड नहीं, ग्रे लॉक, सिल्वर लॉक, सुंदर, मतलब एवरीथिंग इज सो वाओ अबाउट देम, राइट? So एंड देन aesthetic, right? Right. हाँ, हाँ. एंड इवन लाइक हाँ, वो जो आपने बोला था लाइक व्हेन वी वर टॉकिंग द गॉडली, देयर लाइक एटीट्यूड, लाइक नो वन कैन स्टैंड देम बिकॉज़ दे हैव ड्रैगन्स टाइप्स ना, कि हमारे पास ड्रैगन है टाइप्स, उनका जो एटीट्यूड है. और मतलब वो चीज़ मतलब इतनी अच्छी है, एंड देन मतलब वो मतलब लास्ट में जाके जो होता है जीओटी, मतलब वो सब कुछ उसके बाद ही होना है. तो लाइक मतलब थोड़ा-सा ऐसे Right. बुरा सा लगता है कि सैड. हाँ. और मेरे को ये चीज भी अच्छी लगी उसमें, कि वो जो मतलब कि सारा चीज होती कहाँ से शुरू है, जस्ट बिकॉज दे डिडंट वांट टू मेक रेनिस द क्वीन, राइट? मतलब वो ज्यादा हाँ. क्वालिफाइड थी और विसेरिस से, लाइक आई थिंक वो फर्स्ट किन थी ना उसकी, जैसे जहेरिस की. कजिन है सो के जहेरिस हाँ. वाज द किंग और जहेरिस के हाँ. जितने भी बच्चे थे ना तो लाइक ऑल द सन लाइक दे डाइड इन अ वे मतलब ऐसा था. तो हाँ. जहेरिस के सबसे बड़े बेटे की तो हिज नेम वाज हाँ. एमन टारगेरियन उसकी बेटी थी हाँ. रेनी हाँ. एंड बेलन अच्छा. टारगेरियन उससे छोटा था उसका बेटा था विसरस. So like अच्छा. she was the daughter of the eldest son. So basically उसको heir बनना चल. चाहिए. And Jairus की जो हाँ. wife थी ना, she was very हाँ. like मतलब Alicent Targaryen, she was वो बहुत ही feminist थी kind of. वो अपनी मतलब उनकी सबसे बड़ी बेटी थी. उसका नाम भी Daenerys था. हम्म. So she wanted अच्छा. Daenerys to be queen. तो वो है. हम्म. So this was they are cousins basically, Rhaenys and Viserys. अच्छा, अच्छा, अच्छा. अच्छा, अच्छा. ठीक है, ठीक है. हाँ, तो And the मतलब book also है. वो वाली चीज़. हाँ, ये मैं पढ़ूँगी आई थिंक बाय द एंड ऑफ द इस ईयर. हाँ, हाँ, पढ़ूँगी. हाँ. हाँ, फिर शायद मैं जीओटी पढ़ लूँ क्योंकि वो निकाल तो रहा नहीं है नई बुक्स, तो लाइक आई डोंट हैव निकालेगा भी टू नहीं. ऐड. I've given up on that. एक टाइम था when I was very excited कि आएगी आएगी. We am done. पता नहीं यार, मतलब बेचारा, मतलब बहुत ही, मतलब उसका भी क्या ही मन होगा ना कि लाइक इतना पॉइंट ऑफ व्यू मेरे रीडर्स का ऑलरेडी बन रखा है. फिर मैं बुक I निकालूंगा. think I वही. think बुक का जैसे जॉन है and बुक का हम्म. ब्रान है. These characters are very different from how they were portrayed in अच्छा. the show. तो पता नहीं ओके, मतलब ओके. like एक इमेज भी हम्म. बन जाती है ना like I like you हाँ, but you will be वही. able to differentiate book John with show John. Like we don't like Jon Snow I think.
we should say that out loud. So, so when you read Never, the book, you will never. like John. John is not that, I don't know, like so stupid. He's not that stupid in the book. अच्छा ओ मतलब वो स्टूपिड नहीं था मतलब मेरे लिए ना कभी उसका वो वाला ऑरा मतलब ही नहीं आया मतलब कि मैं हाँ सपोर्ट मतलब करूं उसे अथॉरिटी नहीं लगा, राइट, मतलब यू नेवर हाँ फील दैट ही इज दैट किंग, मतलब वो खुद ही से ऐसा रहता हाँ है कि लेट इट बी, जाओ। आई थिंक मेरे को तब एक मोमेंट आया था जब उसको रिजरेक्ट करती है ना वो विच तब मुझे लगा था कि हाँ मे बी ही विल डू समथिंग ग्रेट मुझे मे भी बी लगा था क्योंकि कि मतलब तुम शायद he'll change. क्योंकि तुम उसको वापस ला रहे हो इंसान को तुम विच इज वेरी डिफिकल्ट मतलब डिफिकल्ट क्या Right. इम्पॉसिबल काइंड ऑफ थिंग तो तुम उसको लेके आ रहे हो तो मस्ट मीन समथिंग राइट पर जब मतलब वो होता है ना कि मतलब जस्टिफाइबल नहीं होती जब चीज तो मतलब एंड में जाके तो मतलब मैं ऐसे थी गिव अप कि मैं तो पसंद ही नहीं मतलब करती इसको इनफैक्ट वो नहीं जिंदा होता तो इट वुड हैव बीन बेटर इन अ वे, मतलब स्पेशली हाँ फॉर द लास्ट सीजन की डैनी का हम्म पागल होना जो एकदम से उसका मैड क्वीन बनना दिखाया है एंड हिम किलिंग डैनी, हम्म आई मीन वेरी स्टूपिड आई हम्म गेस, मतलब पता नहीं क्यों ही मारा चलो उसको कोई ना। ठीक तो थी हाँ चलो ठीक है हाँ मतलब हम क्या भावों ही में बोल नहीं सकते। बहते हाँ जब हम कुछ और तो ही बात करने लग जाएंगे। वेयर भी तो मैं बोलने वाली थी कि अब हम बात करते हैं कि बुक्स और शोज में क्या डिफरेंस थे और अगर जैसे बुक्स वाली चीजें अगर शो में होती तो मुझे कैसा लगता लाइक मतलब होता है ना कि मतलब कुछ चीजें ऐसी बुक में होती जो तो जस्टिफाइबल होती है क्या क्या मतलब जैसे मतलब इट्स हम्म राइट, मतलब इट्स हम्म, नॉट फ्रॉम द पॉइंट में आवाज कटा क्या कि इट वाज इट, मत सही था। हाँ हाँ हेलो। नहीं मतलब कट गई थी फिर से तो बोलो इट्स अ हिस्ट्री बुक। हम्म मतलब बुक जो है ना वो हिस्ट्री बुक है, तो इट्स लाइक ये रॉबर्ट ब्राथ है ना, इस टाइम का जो टाइम है ना गेम ऑफ थ्रोन्स का टाइम लाइन, उस टाइम पे वो बुक हम्म इज काइंड ऑफ पीपल विल रीड इट एज अ हिस्ट्री बुक। तो हम्म लाइक इट हैज वेरी हाँ देयर इज नो कंक्लूसिव थिंग की ये historians have written it. तो जो हम्म मेजर चेंज है दैट इज लाइक द एज वाला विचल से, बिकॉज दैट इज समथिंग, मतलब ठीक है वो भी हिस्टोरियंस गलत लिख सकते हैं बट मे बी दैट इज समथिंग विच हम्म कैन नॉट बी डिफरेंट। तो जैसे रेनेरा इज ओनली 8 व्हेन शी इज क्राउन्ड एज द हेयर, राइट, एंड हम्म ये जो इनका रिलेशनशिप है ना रेनेरा और एलिसन का, हम्म बीइंग बेस्ट फ्रेंड्स एंड देन मैरिंग, दैट इज नॉट हम्म प्रेजेंट इन द बुक। दैट इज बेसिकली जस्ट ओके मतलब उसमें शी जस्ट मैरिड एंड शी इज एल्डर टू रेनेरा, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट स्टेप मदर एंड स्टेप डॉटर, हम्म and she's never fond of Renera. She's always very hostile type, मतलब she doesn't like her, मतलब जैसे हम्म ऑटो को दिखाया ना कि वो चाहता है कि उसका मतलब ब्लड बने, तो she is also like that, इसमें हम्म मतलब वो लव एंगल इज नॉट देयर। हाँ एंड सो वही देन लेना का भी एज, मतलब लेना इज बेसिकली एल्डर टू दिस रेनेरा, फिर जो हम्म, 10 साल का गैप है रही, जो हाँ टाइम गैप है उसमें हाँ जो हाँ दिखाया है हाँ ना कि लाइक डेमन इज कम ऑलवेज इन पेंटोस विद लेना, दैट इज नॉट देयर, एंड इन द बुक्स डे मतलब डेमन और लेना की भी रिलेशनशिप इज गुड, मतलब इट्स काइंड ऑफ अ लविंग एक्सप्लोर रिलेशनशिप। एंड हाँ ठीक एंड है द डेथ, वो जो लेना का डेथ है ना ड्रैगन वाला, दैट इज हम्म नॉट देयर, मतलब शी इज गोइंग टू वेगार टू हैव अ राइट, फाइनल राइट, बट डेमन उसको मतलब शी इज वेरी वीक, ओके डेमन उसको पकड़ के वापस ले आता है एंड शी डाइज, इट्स लाइक दैट। एंड आई अच्छा थिंक अच्छा एंड देन ऑब्वियसली द एंडिंग, so ending हम्म is changed in a way, वो एमेंड और लूक का, मतलब एमेंड is like intentionally killing Luke. But again, that is something which या historians can have wrong. It could be that he did हाँ accidentally kill him, but no one will believe, because the person who like Aemond is हाँ that evil person कि कोई भी believe नहीं करेगा. Everyone will be like कि तुमने मारा होगा. यस यस जैसे वो क्लाउस वाला यस चीज जैसे ना, मतलब वो विलन वाला चीज basically. So हाँ I think हाँ और भी होंगे differences कुछ कुछ, कि जैसे विसरस का इतना वो नहीं था, विसरस का कैरेक्टर इज मच बेटर इन द शो, उतना ओके डेवलपमेंट एंड ऑल।
तो हम्म आई थिंक मेजर हम्म चेंजेस यही रहेगा। और अभी तक शो में इनका एक और हाँ बच्चा है, डेरॉन टारगेरियन, वो एलिसेंट एंड विसरस का। ही हैजंट बीन शोन, उसको बुक में दिखाया है कि वो ओल्ड टाउन चला जाता है। तो मे बी लाइक आई हम्म हैव हर्ड दैट मार्टिन हैज सेड कि सीजन 2 में ही विल बी देयर, बट लेट्स सी, एज ऑफ नाउ ही अच्छा हैज बीन ओमिटेड फ्रॉम द शो। तो सो अगर उसको मतलब एक्चुअल में ओमिट किया तो वो बड़ा हाँ चेंज होगा। अच्छा तो लाइक एलिसेंट ऑफ विसेरिस के 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे, राइट। अच्छा ऑल राइट ये चीज नहीं पता थी मेरे को। हाँ तो मतलब हाँ जैसे मेरे को लगता है कि जो शो में जो उनका वो लव एंगल दिखाया ना लाइक दे आर फ्रेंड्स एंड आई थिंक इट मेक्स द सीजन मोर स्पाइसी लाइक जो उनकी वो हाँ छोटी आई सी थिंक। वो होती है लड़ाई। हाँ मतलब वो मेरे को चीज सही लगी अगर वो स्टेप मदर स्टेप डॉटर वाला सीन होता तो मे बी इतना मतलब वो नहीं रहता मतलब उनकी रिलेशनशिप पे जो हुक रह हाँ रहा है ना अभी जैसे कि अब ये क्या हाँ करेगी अब वो मतलब होता है ना क्योंकि देवर फ्रेंड्स एट वन टाइम फिर वो चुपके चुपके उसके पास भी सेरिस के पास भी जाती थी जो वो बताती नहीं थी उसको मतलब थोड़ा सा वहां पे से वो वाली मतलब थोड़ा ड्रामा वाली चीज आ जाती है आई थिंक वो मतलब मेरे को सही लगा चेंज अगर किया भी इन्होंने। और बाकी चीजें विसेरिस का शुक्र है लाइक कैरेक्टर एक्सप्लोर किया इन्होंने शो में मैं मतलब वो ना शुरू में एपिसोड में लाइक आई हेटेड हिम लेकिन क्या हाँ कैसा सा इंसान है एंड देन मतलब उसका जब एंड होता है एंड ही सेज माय लव लास्ट में जाके ना तो मतलब तब तक मतलब ऐसे हो जाता है थोड़ा सा ना मतलब उसके साथ वो इमोशनल कनेक्ट हो जाता है थिंक विसेरिस के साथ कि हाँ समझ रहे हैं हम तुझे यू नो कि तू दर्द में है एंड यू डोंट वांट हाँ। कि हाँ In कि यू fact, लव योर Paddy डॉटर। has also, in fact, Paddy has also mentioned in one of his interviews, I guess, that he like as an actor, he thought of this like building his character in this way. Whatever happened with Emma, he was never able to forgive himself. So हाँ he's like okay with हाँ his हाँ हाँ suffering. And वो My Love is हाँ also improvised by him, I think, if I'm not wrong. अच्छा So, like him saying My नाइस Love in the end is like, like he actually ever always loved Emma. He had to just marry Allison for, for duty. And, I like this fact in the show कि episode 4 में या 3 में be with him now, and she's always in the tribal wala phase when he says that you हाँ are my political headache और ये सब चीजें उनकी लड़ाई होती है। तो तभी एक उनका एक अच्छा सा मोमेंट है when he says that that I married because तुम heir हो and तुमको अगर कुछ हो जाएगा तो you need family to support you. But but the sad part or the ironical part is that that family will become the reason why Renera, like everything would be taken away from Renera. So I think that was also हाँ very bittersweet in a way that Viserys as a father only हाँ wanted to have a family for her daughter so that she's not alone anymore. हाँ And वो हाँ backfire कर गया, तो that's also very हाँ 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 आई थिंक वो तभी बैकफायर कर दिया था जब एगॉन फर्स्ट बॉर्न हो गया था उसका लाइक जब exactly एगॉन exactly. पैदा And हुआ why था। are you naming हाँ in Aegon? मतलब उसमें अकल होनी चाहिए ना कि don't name your son Aegon when you have Rhaenyra as your heir. Like he is literally the हाँ name of the conqueror. कुछ और नाम रख दो. हाँ Why are you naming him Aegon? So I think वो सब चीजों में he is stupid. Like I think वो जो Daemon कहता है ना, you are weak, and like the councilmen can see that, and they are taking हाँ advantage of you. और वो एडवांटेज चीज Viserys समझ नहीं पाता है. Viserys sees the good in people, and Daemon sees who what a पता high tower is. है, Right? मतलब वो उसको ना हमेशा मतलब वो मतलब he didn't do like he didn't do king duties he always did those family वाला stuff like कि सबको वो भी खुश Daemon का रखना डायलॉग है है। ना. He हाँ has never भाई कि been सब good being king. एंड दैट्स सो ट्रू लाइक उसको हमेशा याद है सबको खुश रखूं And मैं this मतलब is कोई हाँ actually a very हाँ important kind of a philosophical thing. कहीं तो मैं पढ़ रही थी या सुन रही something, I don't remember. But but this is actually true. Like if you're a good person, you cannot be a good king. हाँ Like you have to have something, like you cannot be ekdam saint, and you can, because this is always backfire for you. So you have to take, मतलब थोड़ा तो
ऐसे थोड़ा नहीं ग्रे तो होना ही पड़ेगा in that way. So Viserys is that like Viserys is a good person, but because he's a good person, he's not a good king. And though हाँ his reign has been very peaceful and everything, but एक हम्म इनफैक्ट एक हम्म कोट है बुक में, आई थिंक वो हम्म जेरिस के रेन के टाइम का या जो भी है, बट दैट कोट इज वेरी नाइस कि आई एम पैराफ्रेजिंग इट, आई डोंट रिमेम्बर इट एग्जैक्टली, बट हम्म like he says that the seeds of war are implanted during the reign of peace, whenever it is actually peaceful, at that point हम्म, itself the seeds of war are implanted. And I अच्छा think that is what happened, like abhi ye jo dance हम्म of dragons hua, that was because of हम्म whatever was happening in the past peaceful 50 60 years or maybe 70 years jo bhi हम्म the. So हम्म like Jaehaerys ka plus Viserys ka, so that's nice, हाँ that's nice. I think Martin yeah writes, like he creates a very beautiful world, and creates very beautiful हम्म characters. And like हम्म Cersei is someone who I like. Everyone hated, right? But I like हाँ she's my favorite character. And हम्म like even a villain like her, you can see, you can like her. Like there's no, like no one will feel weird about liking her because she has that हम्म power and she has that aura to be who she is. हम्म तो हम्म वो बहुत awesome चीज लगती है मार्टिन, बट आई थिंक वो yeah चीज वही, मतलब their relationship is good, but शो का like if I say a negative thing for me is that I think the हम्म women, they're trying to take away power from them. Like मतलब ऐसा लग रहा है कि all हाँ the men are trying to orchestrate everything and women don't have that evil nature to do things, right? But that's not true. I think हाँ women can be very much evil. Cersei is a very strong woman character, but you cannot say कि वो जेमी की हम्म वजह से उसने ऐसा किया या रॉबर्ट की वजह से उसने ऐसा किया. She is हम्म she is Cersei. She'll do things as she wants. यस हाँ मतलब वो वाली चीज सही थी, जैसे मतलब एलिसन का कैरेक्टर तो मतलब समझ ही मतलब व्हेन आई वाज बिंज वाचिंग टू बी ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट, तो पहले 3 एपिसोड से जब वो बच्ची होती है लाइक व्हेन बहुत शी ही इज sympathetic. ठीक है, तो कुछ बोलती नहीं भाई, वो उसके एक दो डायलॉग्स होंगे, वो भी रेनेरा के साथ होंगे, विसेरस के साथ, वो आई थिंक शी इज रीडिंग दैट लेटर, बस उतना सा उसका है जो बोलने वाला पार्ट है, बाकी तो जो भी करती है उसकी प्रेजेंस ही बता देती है, बट लाइक व्हेन दैट स्विच्ड लाइक द 10 years later स्विच्ड, तो लाइक एकदम से वो इतना बोल रही है मतलब हर जगह बोले जा रही है, तो लाइक मतलब एक पॉइंट पे अनोइंग था वो भाई कि लाइक कीप योरसेल्फ कंपोज्ड, बट हाँ लाइक वो होता है ना कि कैरेक्टर आर्क या मतलब इतने साल 10 साल हो गए, अब मतलब शी इज लर्निंग अबाउट कि वो क्वीन है, वो कर सकती मतलब अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज कर सकती है जो भी है, बट लाइक आई डोंट नो, फिर उसको इविल बना देते हैं, फिर उसको गुड बना देते हैं, मतलब जब वो मर जाता है विसेरिस तो एकदम से, तो लाइक शी गेट्स टू नो कि काउंसिल पहले से ही प्लान कर रहा था कि एक और को प्लान कर बनाना है, रहा है, राइट राइट. हाँ तो वो तो भी ऐसे हो इसका जाती है कि कैरेक्टर इस राइट, हाँ इसके कैरेक्टर में ना, तो लाइक हम्म मैं जब मेरा हम्म पॉडकास्ट के लिए लाइक आई वाज थिंकिंग द हम्म दीस थिंग्स, हम्म तो पहले लाइक ऑन हम्म फर्स्ट इम्प्रेशन आई फाउंड हर टू बी वेरी इनकंसिस्टेंट, लाइक इनकंसिस्टेंट इन द सेंस, हम्म अगर तुम देखोगे उसको कि ठीक है पहले तो वो टिमिड थी, फिर 5th एपिसोड में एकदम से जब उसको पता चला कि रेनेरा लाइड, तो वो अपनी ग्रीन हम्म ड्रेस में आ गई, शोइंग दैट नाउ शी इज लाइक शी हैज काइंड ऑफ सेइंग कि अभी हम वॉर हाँ पे है टाइम, राइट. फिर वहां हाँ से 6th एपिसोड आया एंड 6th एपिसोड में शी हैज दैट कम्प्लीटली evil vibe that अभी she doesn't care हाँ about Renera. She is outrightly saying that she's a whore in a way, and like हम्म, उसके बच्चे bastards है, and she is like asking हाँ Viserys to do something. And उसके बाद when हम्म Renera says कि भाई शादी कर दो जेस और हेलेना की, तो she is like no, I won't marry my daughter to a bastard and all these things. तुमको इतना पीस था तो you could have done that, right? So she is like, I have हम्म like मैं war, I am very much ready for war. फिर वो एगोन को भी जाके बोलती है पकड़ के कि you have to be king. हम्म एगोन तो पागल है, like हम्म he is least bothered and she is उसका like no, you have to be king. है ना, तो वो बच्चे को भी हाँ ऐसे कर रही है, like she is not a good parent in a way, right? एंड हाँ उसके बाद फिर हाँ एकदम से दिखाया है 6th 7th में उसका वो एटीट्यूड है, तो मुझे लगा कि नाउ दे आर बैक टू इविल एलिसेंट.
and they'll have that. फिर episode 8 से now again she became timid. मतलब 9th episode में मुझे ये चीज weird लगी कि she is like, अरे you are planning behind my back, like making Aegon the king, but she was the one वो who तो was बहुत saying to ऑब्वियस Aegon था। कि you are king. हाँ वही तो Aegon को हाँ। बोल रही थी कि you will be king one day. So why is that surprising हाँ, for her? तो फिर उसके पता नहीं, बाद वो तो like मेरे then लिए भी so I सरप्राइजिंग found लगा। that very inconsistent. But I was in मतलब मैं ऐसे इंट्रोस्पेक्टिव हूँ, मुझको ऐसा लगा कि her character has been shown to be very timid, like like she's someone who will blame हाँ, things on someone else कि मेरी शादी मतलब हाँ, मैंने वो ग्रीन ड्रेस पहना क्योंकि रेनेरा ने क्रिस्टिन मुझसे झूठ बोला, वो कोल के साथ थी, राइट, ऑल दीज थिंग्स, and she'll always find a reason to say मेरी गलती नहीं है, like she is not able to हाँ, see कि I am a villain. मतलब जैसे ऑटो है, राइट, ऑटो हैड दैट, मतलब उसको पता है कि what I'm doing is villainous but I am who I am. बट एलिसन को थोड़ा वैसे दिखाया, तो आई थिंक कि जब वो एकदम पास आ गई ना वॉर एपिसोड 9 में, तो अगेन शी स्टार्ट टू गो बैक टू हर ओन कैरेक्टर, तब शी वाज रेडी फॉर वॉर। ऐसा होता है ना कि हम पूरी जिंदगी किसी चीज का करते हैं कि होगा तो वील बी वेरी मच रेडी फॉर दैट, बट वो चीज आती है तो वी गेट कोल्ड फीट। So I think maybe she started rambling and saying हाँ, that okay, Viserys wanted it, but she very well knows that Viserys तो मतलब उस समय तो he was saying anything, right? You cannot believe it, but she हाँ, found something to हाँ, rely on, to blame on. हाँ, So bad, but let's see अभी episode season 2 they'll make it out. हाँ, ये बात तो सही थी। लाइक मतलब पूरा आई एम अग्रीइंग, मतलब जो भी आपने बोला ना, क्योंकि लाइक मतलब मुझे भी समझ नहीं आ रहा था, शुड आई हेट हर, एम्पैथाइज करूं इसके साथ, लाइक होता है ना। बट जब उसे लास्ट में वो लेटर भेजा, तब तो मैं ऐसी थी कि पागल औरत है लाइक व्हाई वुड यू सेंड दैट पीस ऑफ पेपर That टू scene was the अवॉइड द worst वॉर। scene. हाँ, मुझको तो मुझको वो वही। सीन बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, लाइक पूरे शो में फिर से दैट वन सीन व्हिच आई डिडंट लाइक एट ऑल वाज दैट सीन। आई थिंक मतलब दैट टुक अवे द एजेंसी फ्रॉम बोथ दीज कैरेक्टर्स। मतलब एक तो एलिसन ने वो हाँ, पेज रखा, मतलब इवन वो एपिसोड 6 and 7 के बाद भी, like 6 and 7 we can see that she hates Rhaenyra, right? उसके बाद भी हाँ, she has kept that page, so which was weird. Then Rhaenyra being like, Rhaenyra lost her daughter, Rhaenyra lost her father, she was not even called for the funeral, and Rhaenyra lost her throne. And उसके बाद भी she is like, okay, yes, वो page से she's forgetting everything. So that was very weak. I don't know, like I didn't like it. हाँ, 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 yes. So we'll move on to the next question. तो लाइक ये हो गया, अब ना रैपिड फायर है, लाइक वो वाले Okay, क्वेश्चंस, शिप और डिच, ठीक है, शिप और डिच। okay. तो वुड यू शिप और डिच लेनोर एंड रेनारा? रेनेरा, लेनोर, डिड यू But फ्रीज? not shape, obviously. They both, I sorry. I was saying that they're good friends, but I won't ship them. They were not happy in that relationship. ठीक है, ओके, एलिसेंट एंड रेनेरा? You? डिच। No, I don't like them. Bitch. आई थिंक You मे also tell बी आई yours. वुड हैव शिप, मैं शिप करती हूँ उनको अगर फर्स्ट एपिसोड जैसा ही Oh, रिलेशनशिप है तो। Mera maybe because I read the book before, so I already hate Alicent, right? Like, matlab, after reading the book, I was always team black, and I'm like, no, I don't like Alicent at all. So it's hard for me to see her to be the sympathetic character, because I have that impression seeing her to be this evil character. So maybe that's why, and matlab, they're good friends and all, but I don't know. I'll ditch. I don't like them. ओके, ओके, कोल एंड रेनेरा? Okay, a big ditch, like the biggest ditch ever. अरे अरे, कोल एंड एलिसेंट? I think ship दोनों ऐसे हैं। You also tell once I'm saying. I अच्छा ship हाँ, ठीक है। कोल एंड रेनेरा मेरे को अच्छे लगते थे जब वो मतलब उनका रिलेशनशिप फेस लग रहा था। ये सॉरी। भी
मतलब he is hot, the You character know, जो okay, वो है ना. I'll add one thing off topic. So Kristen Cole book में I didn't like him, right? और हम्म उसको जो Fabian Frankel, the actor who plays, he's so hot. So I was like कि हम्म how, like I think हम्म episode 2 या किसी के बाद तो मैंने शायद Instagram पे story भी डाली थी कि when you're supposed to hate him, but the actor who is playing him is so hot. So that is so वही wrong. तो वही तो मतलब जब वो फर्स्ट एपिसोड में ही आया था ना, तो मैं सोची थी कि लाइक यू नो कि लाइक कितना हॉट है Very ये. hot. फिर उन हाँ जब उनका वो पूरा ट्रैजेक्टरी बनता है and फिर तो चलो फॉल ही है आगे, प्यार बट मोहब्बत व्हेन इट्स ऑन द हाँ. राइज, हाँ मतलब वो मस्त है, बहुत मस्त है. ठीक है. कोल एनालिसिस मेरे को तो आई शिप बेकार लगते थे ये. मतलब मुझे कोई उनसे वो ही नहीं. आई एम इनडिफरेंट टुवर्ड्स देम. आई थिंक दोनों पागल है. अच्छा Like ठीक है. I think they both love Renera in a way, in their own हाँ. complicated way, and they're upset that she chose other people like Harvin and Damon instead of them. So I think they have that, मतलब उनको ऐसा है तो आई थिंक वो होता है ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त. आई थिंक वो आपस में हाँ हो के दे कैन बी हैप्पी. रेनेरा को अकेला छोड़ दो. हाँ. मोर लाइक दैट. बट वो छोड़ेंगे नहीं. हम्म. मेरे को लगता ना कि हाँ इससे ना मुझे ऐसा लगता है कि उनको हमेशा से प्रॉब्लम थी कि रिनेरा वाज वेरी हेड स्ट्रॉन्ग, लाइक इवन एलिसन, हाँ, वेरी वेरी इवन फियर. कोल. हाँ हाँ, और बोल देती थी वो मुंह पे उसको जो भी है. जैसे एलिसन तो सब अपने अंदर तो ऐसे पाइल अप करती रहती थी, और कोल ने तो चलो बोल के भी देख लिया, बट उसको चलो रिप्लाई भी मिल गया, तो उसको गुस्सा आ रहा है कि उसने उसको ऐसा रिप्लाई दिया कि हमेशा तो मेरे साथ ब्रैग करती रहती थी, अब जब मैंने बोला तो हाँ. लाइक शी इज लाइक कि नहीं मैं नहीं छोड़ के जाऊंगी. तो और वो वो कितना स्टूपिड है. वो हाँ क्यों छोड़ के जाएगी? शी पता इज द एयर. मतलब हु आर यू? आई नहीं. डोंट नो. मतलब आई डोंट लाइक क्रिस्टन कोल. सॉरी. आप मुझे उस टाइम में सोगी फिर तो पागल हो गया है क्या, मतलब तो उसी का ही स्वॉर्न वो है भाई, तो खुश रह ले, मतलब जैसा चल रहा है वैसे उसमें. हार्विन स्ट्रॉन्ग से सीखना चाहिए ना. अरे हाँ नेक्स्ट मेरा वही है, स्ट्रॉन्ग एंड रेनेरा. शिट. शिप शिट यू. मैन, अरे उसने लूक और जेस को भी बहुत प्यार से रखा था यार. Ship, लाइक man. I wanted to see more of their relationship, and I hated that we didn't get anything. और Directly बेचारे को मार. episode 6 है. और मारना तो मुझे पता था कि और मार देंगे. तो But अच्छा. ओ. अच्छा ठीक है, चलो नेक्स्ट next. वन इज वेरी इंटरेस्टिंग, रेनेरा एंड डेमन. I mean, should that be a question? नो, एंड गेम, देयर एंड गेम. अच्छा. I am very पता नहीं, but like Ship Max. हाँ भाई मैं तो एंड गेम बोल रही हूँ उनको. अच्छा नेक्स्ट बड़ा हाँ. इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना. लैरिस Okay. स्ट्रॉन्ग एंड एलिसन. Feet fetish. No, I don't ship them. Bitch. ओ The भाई. creepiest thing. Matlab, after 8 seasons or maybe 6 seasons of Game of Thrones and reading the book and watching the show, that was the creepiest thing I've ever seen. मेरे को बहुत फनी लगा, इतना फनी लगा ना मुझे, मैं से कि और ना एक और उसका मीम एक था मीम था. कि बोलो बोलो. एलिसन वाज द स्टार्टर ऑफ ओनली फीट, व्हिच इज Oh my वेरी god. अरे उसके बहुत मीम थे. हैंड ऑफ द किंग, फीट ऑफ द क्वीन, ये सब. फिर एक मीम था कि शी इज कॉलिंग रेनेरा और होर एंड देन शी इज टेलिंग हर फीट. और पता है एक एक ट्वीट था कि इस सीजन के बाद उसकी ना फीड दिखाई है वो शो में ना, तो वो वाली हाँ. फीड का जो स्क्रीनशॉट है वो उन साइट्स पे ऑलरेडी बिक रहा होगा, लाइक ओह. विच इज मतलब That विच was कैन very बी ट्रू, weird. मुझे ऐसा लग रहा है. हाँ बहुत ही तो creepy ठीक था है, वो. नेक्स्ट वन. हाँ मेरे को तो बड़ी हंसी आई, मैं हंसी हूँ उसमें लेजिट. फिर मैं तभी सोचू, मैंने कहा यार ये इसको कैसे पे करेगी, जब वो बोलते हैं हाँ. कि फेवर देगी, और फिर मैं जब वो वाला सीन दिखाया मैं कहा ये तो मस्त सीन है, इसको कुछ नहीं हाँ. करेगी. ये अलग ही चीज है. हाँ, हाँ. चलो नेक्स्ट है विसेरिस एंड एमा.
Viserys and Emma ship. Chip. You Viserys and Alicent. हाँ शिप सेम. dead. भाई Dead. वो जब वो एलिसेंट को एमा बोलता है, ओ माय गॉड. I love that. वो सीन मैंने 2-3 बार देखा है. और I am पीछे going से to उसका sleep, वो Emma. किंग्स नाइट, उसका पीछे से किंग्स गार्ड बोलते कि एलिसेंट को ऐसे ऐसे. ओ फिर तो बेचारे भी सेरिस की शक्ल इतनी सी हो जाती. मस्त था वो. And फिर अच्छा ठीक मतलब है. वो सही है Emma. बोलो हाँ बोलो. हाँ हाँ, Next. अरे मस्त सीन है. नेक्स्ट था लूक एंड जेस एंड बेला एंड रेना, मतलब वो चारों का जो रिलेशनशिप बनाया हाँ था. मतलब समझा. Luke and Rhaena ship and Jace and Bella ship. ठीक है, मेरा सेम आंसर है. Same. एगन एंड हेलेना. Ditch. पता है हेलेना का मैंने आपको भेजा था ना, वो एक चीज जो थी, वो जो भी बोलती है ना, वो एक प्रोफेसी होती है, पता है आपको? हाँ जो भी बोलते अच्छा हैं आपको तो पता prophecy है. होगा, बुक्स में पता है. नहीं बुक्स में बुक्स में ऐसा पता नहीं है. है बट बुक्स में हाँ. ऐसा नहीं है बट बुक्स में ऐसा है कि हेलेना वाज मतलब एक हेलेना इज ओनली ग्रीन आई लाइक एंड उसका ना मतलब हम्म, वो उसको रेनेरा भी पसंद मतलब रेनेरा भी पसंद करती थी हेलेना को विच आई डिडंट लाइक कि शो में ना लाइक रेनेरा और हेलेना हम्म, का कोई रिलेशनशिप दिखाया ही नहीं है बट इन द बुक लाइक हाँ वो हाँ जब हाँ. बोलती है ना कि लाइक आस्क माय हाफ ब्रदर तो शी ऑलवेज refers to Aegon and Aemond as and Daeron as half brothers बट इसको सिस्टर हम्म. बोलती है तो शी इज लाइक कि टेल माय हाफ ब्रदर्स एंड माय स्वीट सिस्टर टू बेंड द नी मतलब तो यू नो लाइक आई लाइक हेलेना वो बहुत अच्छी लगती थी. गूज बम्प्स, प्यार, ये प्यार थी ये चीज. हाँ तो तभी मैं हाँ सोचूं, मैंने कहा वो उसको बता रही है आके कि आई थिंक कुछ बता रही होती है ना वो आके उसको एलिसेंट, फिर वो बोलती है कि देयर इज समथिंग एक बीनीथ द बोर्ड. एक पहला एपिसोड हाँ वो तो रेनीस का था फिर एक पहला एपिसोड था उस टाइम पे लाइक मुझे शो में ये चीज बहुत अच्छी लगी है देयर आर मेनी फोर शैडोइंग जब तुम दोबारा देखोगे ना या बुक हाँ. पढ़ के देखोगे ना तो यू विल सी दैट दे आर फोर शैडोइंग दी फ्यूचर इवेंट. तो एक सीन है एपिसोड हाँ. 6 में जब एमेंड को ये लोग पिंक ड्रेड के साथ वो करते हैं ना टीज so he comes to Alicent and Alicent उसको समझाती है that you'll have a dragon one day. So Helena का dialogue है that he says that he has to close one eye. So that was हाँ that was very prophetic मतलब ऐसे कि नाइस and we नाइस. knew that Aemond को आंख जाएगी वेगार मिलेगा तो वो बहुत सही कनेक्ट था. तो नाइस. रिवॉच वैल्यू बहुत बढ़ जाती है शोज की स्पेशली फॉर पीपल जिन्होंने बुक नहीं देखा और जैसे भी हम दोबारा देखेंगे ना तो वो काफी सही लगेगा. चलो ठीक है, वी आर ऑफ टू सम अच्छे से क्वेश्चंस नाउ. फेवरेट Aemond, कैरेक्टर. Aemond and Helena, you missed Aemond and Helena. So like many people ship them, you know. And there's a theory that Helena के बच्चे are Aemond के. That's a theory. Like that's not true. I don't know about it, but it's a theory. अब फर्क Aemond भी and क्या Helena. But I पड़ेगा, think Aemond and Helena. बाल तो तुम्हारे I'll skip सिल्वर ही it. आने हैं. वही फर्क ही नहीं है सब एक जैसे हैं. उनको फर्क ही नहीं पड़ता, उनको चाहिए बस बाल सिल्वर हो. सीधी बात है. वही बेचारे बोलू ना, इनका हो जॉन गया स्नो के बस. बाल. हाँ ये जेस वगैरह बेचारे के ब्लैक हो गए ना बाल वो प्रॉब्लम हो गई. तभी तो सारा सीन हुआ, होता ही नहीं तो फिर सीन, तब तो नहीं होना जनरा था का ना. आता तो कोई हाँ. प्रॉब्लम ही नहीं होती. हाँ. अच्छा फेवरेट कैरेक्टर. हाँ डेमन योर्स. दिल दे चुके सनम. हाँ सेम. पहले मेरे को पसंद नहीं आया था डेमन, लाइक हाँ तुम्हें बताया मुझे. पता नहीं, मैं सोची कि अच्छा अब मुझे पसंद आ रहा है, फिर वो कुछ कर देता था, फिर मैं सोचती थी अरे नहीं ये तो इविल है. और मेरे पास ऑलरेडी ऑन स्क्रीन विसेरिस था, मतलब होता है ना, यू हैव टू इमोशनली इन्वेस्ट जब. तो मैं सोचती कि मैं कोई एक ऑलरेडी कैरेक्टर. विसेरिस को हाँ दे रही हूँ अपना प्यार, तो लाइक डेमन हरकतें करता रहता था बीच बीच में. पर जब वो वाला एपिसोड है ना वो जिसमें वो लॉन्ग वॉक ऑफ किंग जो है उसकी, जब वो एयर हाँ जब सर्व वो आता करती है है, अपने रेनेरा के लिए राइट. हाँ तब तब डेमन पसंद आया था मुझे. तो लाइक अब लाइक कि हाँ इस तब मुझे पूरा मुझे तो गेम पहले समझ आई एपिसोड से ही कि पसंद वो इसको था. इसको कभी चाहिए ही नहीं था थ्रोन, ही ऑलवेज मतलब वो
था कि उसका भाई से ही हाँ. प्यार था He उसको। never he never wanted the throne. हाँ, He never पहले मुझे wanted a लगता था कि throne. वो He कर just wanted that acceptance. हम्म I find his character मतलब जितना पता नहीं मतलब जैसे क्लाउस का कैरेक्टर है ना, so हाँ, like it's kind of like that they'll show that they are just मतलब मेरे को लगता है monsters क्लाउस and के they साथ are मेरे को भी monsters. क्लाउस बहुत पसंद है। हाँ, मतलब पर अगर मतलब उसमें ऐसा था शो में ओरिजिनल्स ही देखा है वैसे मैंने, तो लाइक उसमें ऐसा था कि दे वुड शो हिज वीक पॉइंट्स, मतलब डेमन के कभी लाइक हाँ, दे वुड मतलब उन्होंने दिखाया ही वो नहीं है। इन्होंने नहीं. और हाँ, और मैं ऐसे थी जब मैं बिंज वॉच कर रही थी ना, जब वो लेना क्या नाम है उसका, लेना मर जाती है एंड दे आर देयर ऑन दैट, मतलब वो दोनों लेना. वहां बैठी हैं, डेमन यहाँ है, और मैं लिटरली आई एम चीयरिंग ऑन हग हग हग, लाइक अगर वो तब हग कर देता उनको विच इज डिलीटेड, विच आई नो इज डिलीटेड, And there तो was अगर a scene. हाँ, right. आई नो बट मतलब एज अ कंज्यूमर बता रही हूँ मैं आपको, लाइक द वॉचिंग इट एंड नॉट हैविंग रेड द हाँ, I बुक्स, got it, got जस्ट it. वॉचिंग इट, आई वाज लिटरली लाइक ये मतलब अगर तुम सीन वो दिखा भी रहे हो तो इवन इफ मतलब कोई भी बैठा हो मेरी जगह जिसमें मतलब इतना वो भी नहीं हो, लाइक यू नो कि कोई दिमाग लगा रहा है उस शो में, नहीं लगा रहा, बैकग्राउंड में देख रहा है, या तो हाँ, मतलब दे आल्सो वांट कि तुम मतलब अब तो हक कर दो, नहीं तो वो सीन का कोई मतलब ही नहीं था, लाइक he's just standing there, they're sitting there, मतलब what's the point, मतलब वो blank scene just था मेरे लिए, walking on. like कोई point नहीं था। हाँ, ठीक है, तो I काफी think, सीन्स I ऐसे थे think, जो blank थे बिल्कुल। हम्म I think Damon के साथ they like I don't know like they have a great actor to portray him. They हम्म have a like great हम्म like that character in himself is such so has हम्म so much of potential that they have this हम्म like उनके पास this they have this I don't know what to say but basically they can हम्म create one of the greatest TV characters if they want to because हम्म हम्म because book में भी it's all about your perceptions right हम्म, हाँ, is this thing that what हम्म, happened, what not happened. So, like you don't know what's actually true with Damon. But over here you have हम्म, that uh, thing that where you can show that. And I think kahin pe they have हाँ, showed it, like, matlab thoda. But wait, हम्म, deleting that scene and, like they're trying to take away, like they're trying to make him more complex. Maybe they'll redeem, not redeem, but like they'll maybe show it in the next season. But I don't know, like Jamie ka character tha. So like Jamie was my favorite character in the show. So हम्म, Jamie ka character was हम्म, some like पहले एपिसोड में you'll hate him. He literally वो हम्म, उसको ब्रांड को गिरा देता है, right? But I don't even know when I fell for him. एक तो binge watch कर रहे थे, तो you don't have that time to हाँ, सोचो उनके लिए. तो it was like within a week आई I थिंक started watching this show. जब उसका टेरियन के हम्म. साथ एक वो होता है, कुछ हार्ट फेल्ट मोमेंट होता है, वो एक नहीं होता है नहीं टेरियन के साथ। उसका हाँ वो तो बाद में होता है सीजन 4 में आई गेस. एक होता है अच्छा, जब ये बाथ टब में बैठा होता है लाइक हिज हैंड हैज बीन कट और वो अच्छा, हाँ, ब्रियन के काट साथ. दिया होता है। हाँ तो आई हम्म थिंक लाइक जेमी so Damon is also like that like अभी जेमी हम्म को भी everyone was like he is a king slayer and like all these bad things हम्म and but you have that ability to show that he is not a villain, he's an हम्म anti-hero, that that or हम्म in fact book mein like there's a literal quote wherein he says that Damon was the हम्म blackest of villains for some and a hero for हम्म others, so he's like he is हम्म the greatest character to exist in Westeros. तो अभी आई थिंक हम्म, वो सीजन 8 सॉरी एपिसोड 8 का वो सीन वाज गुड वेयर इन वो थ्रोन अपने भाई को करता है एंड दैट इज अ वेरी नाइस हाँ, पैरेलल कि पहले एपिसोड में हम्म व्हेन ही सेज दैट यू नेवर आस्क्ड मी टू बी योर हैंड and Viserys is like that he never trusts Daemon enough to make him hand हम्म and हम्म Daemon will always care for Viserys, and Viserys also loves Daemon, but like he's not हम्म able to trust him with the council, with the all these things. And when in episode 8, when he's there हम्म for Viserys when no one else is, so he's like literally giving him हम्म his hand. So he's like, मतलब हम्म मुझे वो parallel बहुत अच्छा लगा, like he's being the hand which Viserys needed at that point of time.
and that हम्म crowning Viserys. I think वो बहुत अच्छा है. And I love Daemon and Viserys का bond. That was also very nicely explored in the show. But you हम्म know, but I think जब तुम इतना अच्छा story बनाते हो, इतना अच्छा वो बनाते हो, there will always be people who will have complaints, हम्म right? मतलब मुझको भी है, क्योंकि you know, हम्म like अभी मैंने book पढ़ा, I have a different perception. हम्म And I'm watching the show, हाँ it will not match with what the writers want us to see. हम्म But I हम्म think हम्म Damon ke saath they should justify. But why? Like I mentioned this in my podcast also that I'm happy with हम्म how I see him, and as of now I'm happy with how he हम्म has been shown in this season. But हम्म आगे, हम्म because there are many things which he'll do अभी आगे, मतलब we हम्म won't spoil, but हम्म you know, like how that will be shown, and it I don't know, like let's see, like I have a different हाँ हाँ story what happens, so हम्म we'll see. बढ़िया तो टीम ग्रीन्स और ग्रीन टीम ब्लैक्स Black all the way. ब्लैक्स Black all the way. फेवरेट एपिसोड Episode 8 and then episode 1. I would say episode 1 was also वन good. Yours? अच्छा मेरा एपिसोड 8 वो डिनर वाला ही पसंद है मुझे मतलब काफी अच्छा लगा Least था favorite episode? सोचने दो एक तो मैंने ना बिंज वॉच किया तो लाइक आई रियली कांट मैं बता देती हूँ कौन सा सीन पसंद Differentiate. आया You हाँ tell हाँ me the मुझे scene, लगता I'll है tell you which episode it is. आई थिंक वो जब वो सी स्नेक वाला सीन होता है ना जब वो लड़ने जाते हैं आई गेस वो वाला चीज मेरे को इतना मतलब पसंद नहीं आया था लाइक वो Episode एग्जैजरेटेड था ना 3. पूरा क्रैब फीडर जब Damon crab feeder को हम्म मारता है. हम्म वो हम्म episode 3. Okay. I मतलब think हाँ my मतलब least was डेमन that was Damon का बहुत कौन सा badass scene. It was a favorite bad. वो जो हाँ crab मतलब feeder को वही मारता चीज है. पसंद थी मुझे मतलब वही बाकी चीज पसंद एपिसोड आई थी वाज, मुझे हाँ वो लास्ट के हाँ 10 बाकी मिनट वर गुड, कोई नहीं बाकी एपिसोड वाज नॉट गुड. हाँ हम्म. हाँ वही हाँ, I think even when I was अब watching it I was like war दिखाओ, but there was no war, there was more of वो किंग लैंडिंग में ज्यादा हुआ हुआ था. But I think episode 9 I didn't like that much. ये हो ग्रीन सकता है काउंसिल, मतलब हम्म एगॉन को ढूंढ रहे हो, आई दैट वाज वियर्ड, मतलब वो टाइम वेस्ट लगा मुझको थोड़ा फाइंडिंग एगॉन. मे बी दे हाँ वांटेड टू शो हाउ हु एगॉन इज, वो बच्चों वाला सीन एंड ऑल, एंड वो सर एरिक पर वो और बहुत सर ही अजीब एरिक. था लाइक हाँ हाँ मतलब वो जो उन्होंने दिखाया ना वो पिट वाला मेरे को मैंने पढ़ा वो ट्विटर पे दैट He इज just सपोज टू said बी अ is बिग थिंग इन कमिंग हाँ हाँ कमिंग एपिसोड्स आई hmm, गेस लाइक सीजन्स बट that आप that ऐसे that इंट्रोड्यूस कर रहे child हो is going to be हाँ, it's हाँ going to be a big thing. हाँ, but I didn't like, एक तो एगॉन खो गया, like you know, like they're finding him, and फिर वो I don't know, maybe I'm more of, एक तो blacks हैं अब लोग, there was no, like we didn't have our representation there, तो वो थोड़ा था, but I think episode 9 lacked a few things. और वो जो तुमने, हाँ अब जैसे मेरा 10 के साथ प्रॉब्लम क्या थी कि 56 मिनट्स का फिनाले, लाइक you could have made it longer, it was very short, मतलब जितना तुमको स्टोरी लाइन कवर करना था, they covered three things in there. One is the miscarriage, second is the coronation of Rhaenyra, and third is Luke's death. And that are three major events which are happening, and you could have, you know, stretched it out to at least 1 hour हाँ 15 स्पेस minutes. पे 10-15 मिनट बढ़ा सकते हो. दैट इज माई, अब यार स्ट्रेंजर थिंग्स 2.5 घंटे का सीजन फिनाले कर रहा है, तो तुम लाइक 1 hour 15 minutes का तो कर ही सकते हो, एंड देन यू आर डिलीटिंग सीन्स, and it becomes so वो frustrating तो to see बहुत ही that are हाँ you are actually shooting the character, the actor is, you know, investing their time and shooting that scene, making that character, you know, likable, like I'm talking about Damon, and then all of a sudden you are like not there. तो तुम्हें पता है वो जो डेमन का आग वाला सीन कट हुआ था, तो जो एक्ट्रेस प्ले करती है ना छोटी रेना या बेला कोई एक, तो शी हाँ हाँ उसने पहले पोस्ट किया कि ही इज नॉट ऑल दैट बैड, राइट? उसके बाद लेटर ऑन शी पोस्टेड दैट हग सीन एंड शी वाज लाइक कि दिस इज हाउ इट एक्चुअली एंडेड. You know, like even the actors are not happy with the way they ended that episode. हाँ
तो मैं ही बोल रही हूँ कि हो जाना चाहिए था। वो हग सीन वाज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक all of the deleted scenes, I think the hug scene because and the grieving Damon when they're uh, उनका that miscarriage Damon का होता है last episode. हाँ. hmm, the problem was that Damon has like what I find problematic with Damon is that Damon has kind of a non-existing relationship, non-existent relationship with his daughter. कुछ दिखाया ही नहीं हाँ. है. There was only one scene where he's teaching हम्म. Bella, वो 6th episode में, and then Reina तो बोल ही रही है कि he is ignoring me, and you know like there is no, हम्म. and that I don't know, like I won't spoil, but there are things which will happen in हम्म. the future episodes. So अच्छा. you know like there's this major thing which is happening, and like I think हम्म. like when you read the book, you like what I हम्म. perceive him to be is that he is a badass and he is a हम्म. great cat, like he is a villain. He'll do things like I am okay with all his हम्म. reactions in episode 10 and all through the season, but he loves his family, and you have to show that. Like they've shown हम्म. that with Viserys, that how much he loves Viserys, and with Rhaenyra also, but हम्म. like not with his हम्म. children. And I think that is weird. Like he loves his children. That should have been shown. हाँ. हम्म. True. Then we'll move on to some fun questions. Like, अगर you, मतलब, suppose you are Targaryen, and what would you like name your dragon? Are Should you I there? name my dragon? Oh, nice. Never thought about it. Yeah, I'm there. I heard your question. I'm saying I never thought Okay. about it. What I'll name my dragon. Good question. What shall I name him? I'll name him. I think some of my literature का कोई तो उठा लूंगी मैं. Some nice name I think. But what will you name? मैं तो सोच रही थी कि like you know अपने नाम के आगे AX वैक्स. Oh, Divac. हाँ. Oh, हाँ वैसे लाइक दे ऑलवेज नेम. मेरे को ना उसमें एक ड्रैगन है, वाइट कलर का है वो. आई थिंक सनफायर है उसका नाम. Sea Smoke. हाँ सी किसका स्मोक dragon है भाई. वो? पता नहीं किसका है, बट वो लेजिट वो सबसे सुंदर ड्रैगन है उसमें. लेनोर का. हाँ. हाँ वो और मेरे वो को भी मस्त बदला है लगा. ना बुक में. बुक से शो में लेनोर dies in the book. In the book. हाँ So हाँ. like अच्छा. again it's history, but it's shown that he's dead. हाँ हाँ हाँ. I don't know. तुम मतलब पता नहीं यार. वो याद है वो इन्होंने अपने डायवोल्स के कैसे नाम रखे थे? लेडी और ग्रे वुल्फ और क्या समर. हाँ मैं कुछ रखूंगी. हाँ हाँ. मस्त है यार वो भी. नाइस नाइस कनेक्शन. अच्छा ठीक है. अगर आप शो में होते और मे बी इफ इट वाज लाइक रियल लाइफ, व्हिच कैरेक्टर वुड यू हैव बीन? Character I would have, I guess, Danny. अगर if you're talking about मतलब पूरा Westeros, नहीं नहीं, तो Danny and HODD सिर्फ. हाँ, तब I think Rhaenyra हम्म. हम्म. maybe. I like her. Like Daemon and Rhaenyra are my favorite characters. Who would you be? मतलब मैंने बहुत सोचा, मतलब जब मैं क्वेश्चन भी लिख रही थी मैंने ना. तो कुछ नहीं सोचा. मैंने impromptu मैंने ऐसे ही बोला impromptu. नहीं मैं भी ऐसी बोल रही हूँ, तो मैं ऐसे थी कि मैं छोटी वाली रनेरा बन सकती हूँ. I guess Rhaenyra रहेगा. Like guess you know she has that. Oh, but पता नहीं like हाँ Rhaenys भी अच्छी है. I don't know मतलब. I हाँ. love that world, but मतलब I मेरे don't को know whether I'll be able to survive. I'll die पहली episode में. रेनिस तो ना मेरे को बेचारी लगती है बहुत जोर से, बट आई हैव माय रीजंस. तो मतलब थोड़ा सा है मतलब थोड़ा सा आता है और कि उसमें बेचारी. और उसमें वुमेन कैरेक्टर्स अच्छे. और कौन से अच्छे वुमेन कैरेक्टर्स है? मतलब वुमेन कैरेक्टर्स ही कितने हैं. बेला बच्चियों का वो कुछ रोल नहीं. लेना अच्छी है. लेना अच्छी है. लेना अच्छी थी. उसका भी लेकिन ढंग से नहीं एमा दिखाया. अच्छी फिर है. ये एलिसन कोई बनना नहीं चाहेगा.
एमा अच्छी एमा थी अच्छी है। एंड हम्म और क्या बच्चियों का आई कोई थिंक रोल वो ही नहीं दिखाया है। बेला इज गुड, बेला अच्छी रहेगी तो मे बी हाँ नेक्स्ट सीजन आई विल से बेला, हेलेना भी बट है। बेला हेलेना भी है बेला, बट मे बी हम्म, बेला, बट बेला लाइक इट्स नॉट, शी इज नॉट हम्म, नॉन एग्जिस्टेंट अभी तक, उसका कुछ रोल ही नहीं दिखाया है अभी हाँ तक, बट शी इज ऑल्सो गुड हाँ कैरेक्टर. हाँ यस यस एंड मैंने पूछा द मेन क्वेश्चन कि सपोज यू आर इन HODD as you are Renera, me child Renera, would you have kept that page if you were Allison for so long? नो आई वुडंट, नो आई वुडंट, भाई आई वो लूज थिंग्स उनके वाइट ऐसे फिश ही नहीं भाई. लगती? हाँ, क्या क्या नहीं लगती? वो नहीं, उनके वाइट हाँ फिश नहीं वो, लगती वो जाती है। हाँ आई लूज थिंग्स like not like not because I hate some or other, I ऐसे ही I lose things, like आज मैंने एक पेपर मिलेगा और कल वो कहाँ है, I will be searching पूरे घर में, and then they are living in castles. I don't think so, like मतलब, and then if I और start to hate that person तब तो हाँ, बिल्कुल भी नहीं. जलाऊंगी फिर तो मैं। ऑल्सो ऑल्सो मैंने जरा एक चीज याद थी मेरे को, जब आई वाज वाचिंग द शो, देयर सो मेनी शॉट्स दे हैव शोन ऑफ रैट्स बट दे डोंट डू एनीथिंग अबाउट इट, लाइक व्हाई आर दोज वो शॉट्स आएगा, देयर? that's a foreshadowing. ओह ऑलराइट, ठीक है ठीक है। मैं ऐसे थी बार बार चूहे क्यों दिखाए जा रहे हैं, वो गुस्सा है। ठीक है That ठीक है there's ठीक a है। reason, I'll tell you. हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, we'll discuss that in second season जो कि 2 साल बाद आएगा, but yeah we will remember this चूहों We'll वाला discuss part for that. sure। हाँ तुम बुक पढ़ोगी, I know you'll get spoiled तब तक तो we'll discuss that तब. हाँ ठीक है we'll discuss। मैंने बोला था कि मेरा हो गया जो मैंने questions prepare किए थे, like the everything, Okay. but if you would like to discuss, I think हमने काफी चीजें like discuss कर दी हैं, but मतलब the main Hmm. like the deleted scenes we discussed, choking वाला part do you want to discuss, तो फिर हम discuss कर लेते हैं। Okay, that's a very controversial part. So when हाँ I watched the episode, I already heard lot many हम्म things that like I don't know. I was hearing things that people will not like Damon in this, and they have destroyed his character and all. So I started watching it. हम्म I think it was appropriate as per हम्म his character has been shown, right? Like हम्म he killed his first हम्म wife, but I understand that argument that he has no affection for Bia, and so like, हम्म but for Renera, like, and in fact in the show they have shown, मतलब बुक में जब तुम पढ़ते हो ना तो वो उसका लेना के साथ भी बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, एंड इट्स नॉट लाइक दैट, बट शो हम्म में वो उनका सोलमेट वाला चीज भी दिखाया है, दैट लाइक ही इज देयर फॉर 10 years एंड ही इज एक्चुअली वो थोड़ा डिप्रेस फेज में, राइट, एंड लेना हम्म बोलती भी है कि आई एम नॉट द वाइफ यू वांटेड, and then in episode 7 हम्म like their wedding and everything, that shows episode 7 and 8 may that that they are in love, very much in love, right? हम्म It's not just a हम्म marriage out of duty. So but still I think that's why Renera ka reaction was also very, like, she was smirking out and she realized that isko pata hi nahi hai, that's why he choked me, right? So I हाँ think हाँ they understand each हाँ other in a very beautiful way, and मतलब I guess हम्म Matt Smith ने किसी तो इंटरव्यू में बोला था कि they are like, they are very toxic, yes, and is it a toxic relationship? हम्म Obviously yes, but they हम्म do have that मतलब एक umbilical cord type का connection between them. So I ओह think नाइस। मतलब ऐसा कुछ बोला था वो, so like even when you're watching that scene and when he chokes her, so I हम्म think he was more upset about it, about the fact that एक तो पहले Renera is being all passive, right, being हम्म like Viserys, हम्म and secondly हम्म he loved Viserys like anything. Like I think he loved हम्म Viserys more than Renera, and when he realized हम्म that Viserys was never actually thinking about him making, like, हम्म making him heir, so I think हम्म that was a very weird thing for him to हाँ happen. So मतलब सैड। ऐसा होता है ना, like I if हम्म like फिर से I'll take example of Klaus. अगर Klaus होता वहाँ पे और वो
रेबेका होती हैं, तो वो उसको स्टैप कर देता उसी टाइम, यू नो लाइक मतलब वो जो पाप उसको वो कर देता था. So I think he has that volatile reaction, and but I don't think so he is like that. Like he is not abusive in his religion. अगर वो इन्होंने ऐसा दिखाया कि भी आगे भी he has always been like this, and that would be something which I won't like. But I think with that particular instance, I'm like, okay. And especially because Renara was okay with it. Like, and I don't think Renara is a passive woman. मतलब, हाँ, she उसको won't इतना allow फर्क नहीं that पड़ा to था. happen. वो किसी if it was someone else, she would. वो दोनों के लिए अगर किसी और ने किया होता, that person would be dead. And अगर Daemon की अगर Renara नहीं होती तो Daemon would have killed that person. You know, like I think he wouldn't have just choked her, but actually killed that person, and Renera would have killed that person for choking him, right? You know. But I think that I am okay with it. It was, I don't know, people are saying that it was very, and it was weird, like obviously, but I don't think so that he sees her as a woman. First of all, like he has always mentioned that in in his own complicated way. So like he has that idea that you are, if you are a Targaryen, you don't have to bow down before anyone. मतलब उसमें वो god complex है. And for Rhaenyra also he thinks so. He will only bow down to two people. One is Viserys and one is Rhaenyra. And he don't. I think that is how I understand him. So when he is choking her, she also is not seeing that okay, she is a woman and she is physically weak. I shouldn't do that. He is just very upset about the fact that she is not reacting the way she should, and that is like she is being out of character. So no, I think that's okay. And फिर end वाला scene I liked it कि when he comes in to inform her हाँ, about वो Luke, मैथ स्मिथ ने he डायरेक्ट takes किया her था. hand, and he takes her hand, and like it shows that they are completely okay. So there is no हाँ. मतलब ऐसा नहीं अरे तुमने मेरा how can you choke me ऐसा कुछ. I think they, if they are okay with it, I am okay with keeping their toxic relationship. हाँ, हाँ. As simple as I that. think there was this But they interview. cannot show him abusive. हाँ. मतलब आगे नहीं दिखाना चाहिए कि अभी अगले एपिसोड में भी मार रहा है. That was okay. Like reaction was appropriate, but ऐसे नहीं चलेगा. So I think वो. हाँ, I think जब वो हुआ था ना What were you तो saying? जब मैंने शो देखना स्टार्ट किया था तो उससे पहले मैंने एक जगह देख लिया था ट्विटर पे कि ही चोक्ड एंड स्टफ लाइक दैट. तो तब मुझे समझ नहीं आया था क्योंकि Okay. आई डिडंट नो हु डेमन इज, आई डिडंट नो हु द मतलब जो नाम थे, तो मैंने कुछ पढ़ा नहीं था. General. तो फिर मैंने देखा, फिर मैंने जब वो सीन आया तो मैं ऐसी थी कि ओ दिस इज अ सीन एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट. बट लाइक बट फिर मैंने वो देखा ना लाइक हाउ दे रीच देयर, मतलब कि उस सीन तक वो कैसे पहुंचे, लाइक कि ऑलरेडी मतलब वो ऑलरेडी मतलब वो कर नहीं रही कुछ, पैसिव है, मतलब लड़ना नहीं चाहती, पीस वाली चीजें बोल रही है वो. उसको गुस्सा आ रहा है कि भाई कुछ कर ले. फिर उसके बच्चे भी आके उसको बोल रहे हैं कि यू वुडंट डू एनीथिंग, मतलब जो भी वॉर को लीड करेगा सब कुछ, मतलब तो मतलब मे बी ही इज फीलिंग अलोन. एंड देन ऊपर से उनके बेटी की डेथ हो जाती है, लाइक दैट मिसकैरेज हो जाता है दैट टू. तो लाइक व्हेन दे स्टार्ट फाइटिंग आई थिंक दे हैव आर्ग्यूमेंट, राइट, कि तू क्यों नहीं कर रही है कुछ, राइट, दैट आर्ग्यूमेंट He स्टार्ट्स says हीटिंग that अप. they are taking हाँ. away your birthright. हाँ. And you're not doing anything, right? So she is like कि वो the song and fire, she has to be that person to hold the realm together types, right? तो अब of course वो ऐसी बातें कर रही है तो उसका गुस्सा कहीं तो जाएगा, like I was thinking that way. तो like I was like that scene was justified. ऊपर से they said in an interview कि जब वो like they were preparing for that scene, they also understood the meaning behind it, like all the grief, all that was on हाँ. stake. Emma Darcy said. तो मतलब हाँ, तो लाइक तो वही मतलब मुझे लगा कि मतलब फिर उन्होंने काफी अच्छा लाइक परफॉर्मेंस दिया. तो मतलब मुझे लाइक देयर वाज नो प्रॉब्लम कि आई डिडंट वांट टू बी अ वोक कि अब वो कर रहा है तो ही हैज हिज रीजंस. अब कुछ भी नहीं उड़ा सकते ना उसको कि क्यों ही कर रहा है, तो क्या करता, मतलब कुछ तोड़ I देता think साइड पे. हाँ मतलब I think there. I think क्या
तूने तो देखा ना, but like when the show was going on. So see, people liked Damon before this show. People liked Renera before this show, and people liked both of them before the show. In fact, you know, like there was this entire. So I'll say one thing. So abhi episode 10 ke baad, Ryan Condal, the creator of the show, he said ki Matt Smith is very charismatic, and you know he has that charisma and all these things. That is why people are like so invested in that character, and they were not expecting कि इस तरह का होगा, मतलब इतना लोग ऐसे पागल हो जाएंगे because he's no Ned Stark. Like my answer would be that I don't know Ned Stark first of all. Like I think he was not a good character, right? And nobody is liking Daemon in a way like we like Ned Stark, right? Like we know who he is. So and the show start हुआ था, no? At that point of time, Matt Smith was being literally you know, like there was this entire some people were tweeting that he's not handsome enough to play Damon, and that was like, you know, very kind of face shamed in a way, and it was not good. And I think Matt Smith looks. हाँ दादी का फोन था, सॉरी, उठा रहा हाँ था। नहीं कोई ना. So you know, so I think he is a great actor, and obviously that did added, you know, I think a lot of power and lot of I don't know, like, you know, like, it made him very intriguing, like the way he portrayed the character. But the problem is, so जब भी ये चल रहा था ना show, so there is this entire section. He obviously, like, we also ship Damon and Renera, and obviously I think they both, like Damon and Renera, are actually in love. There's no doubt that it's just a political marriage. ऐसा कुछ नहीं है. They've always been. Although episode 1 से उनकी chemistry है, right? So there's no denying that. But you know, like एक ऐसा impression बन गया कुछ लोगों पे कि, you know, like वो Disney prince type का character. He'll always react in a good way. But what I think is that he is someone who will react in a volatile way, but that doesn't mean that he doesn't love Renera anymore, right? And even the and no one is seeing him as Ned Stark. So I'm just very, I don't know. Yeah, we put a debate one now, like Damon becoming the internet boyfriend and all the writers saying things negative about Damon. So I think I don't know how they'll carry him forward in the next season. But I think you have to maintain that aura, मतलब like, you know, like. मेरे को ऐसा लगता है कि उसके ऐसे प्यारे प्यारे मोमेंट्स कट किए हैं ना, तो लाइक मे बी द मतलब you're showing मतलब him choking. That's good. Like that's good in a way that it's okay. That reaction is appropriate. But then you also have to show him being loving towards his family, right? Like हाँ that should not be मतलब cut out, right? हाँ हाँ. और So कई like लोग होते he हैं is ना जो grieving in that दे डोंट. episode. हाँ हाँ. And he's grieving मैं in बोल his रही थी कि own way. He won't grieve in a normal way. हाँ Sorry, bolo. या नहीं, मतलब मैं यही बोल रही थी कि मतलब कई लोग होते हैं दे डोंट डू रिसर्च लाइक वी डू, लाइक जैसे मैं चली गई ट्विटर पे एंड यू नो रीडिंग एवरीवन्स ओपिनियन, इंटरव्यूज देख रही हूँ या फिर आर्टिकल्स पढ़ रही हूँ, मतलब तो आई एम गेटिंग द सेंस दैट डेमन हैज लाइक गुड एंड बैड, राइट? बट सम पीपल they don't go into these such lengths to, you know, explore the character. तो अगर वो चीज like we know Damon is good, we know like he can be evil when he wants to, but अगर तुम उसके अच्छे parts शो पे नहीं दिखाओगे तो मतलब how would you, मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या बोल See, रही हूँ? I'm able to understand that. But like what my problem is, see, matlab, we all love villains. Of course, both, like, I think most of the characters which I like, they have that villain thing to them, right? But like मैंने एक tweet पढ़ा था where someone was saying कि Michael Corleone को ले लो, Godfather. People like him, right? But he is not shown to be a rapist or, you know, someone who is, you know, abusing his wife. He, मतलब उसका है, he also gets angry अपनी wife पे and all these things. मतलब ऐसे शायद पता कुछ एक scene है थोड़ा not appropriate, but
that is something which you Hmm. will forgive for one instance. That is out of character Hmm. because of the anger and because of the the heat of the moment, because of sometimes you do Hmm. things which you regret, right? But Hmm. like Damon, but again, you have to show that he is a good person also. Like अभी जैसे I remember that scene Klaus का, which is my favorite scene. I don't know तुझे याद होगा कि नहीं. So मैंने उसमें एक ऐसा scene दिखाया है कि वो ना मतलब कोई तो मर जाता है, कोई वेयरवुल्फ मर जाता है, and everyone blames Klaus, but Klaus didn't kill him. कोई और मारता है, like हाँ the villain killed him, but हाँ Klaus says that I हाँ killed him. He takes the blame, and हाँ everyone becomes very yes anti, like you are a monster, you killed an innocent hmm. person, and he's like, yes, I am the Hmm. monster. But we as an audience know that he's not, and that is how we connect to that character. Like we Hmm. sympathize with him. Ki bhai, हाँ like hmm. like he is not this monster, but we and I think Hmm. ऐसा होता है कि when you see that in the show and you are able to understand कि everyone Hmm. sees him and so he's lonely in a way. So as Hmm. an audience, you feel that okay, you try to tell that character that no, you're not, right? And फिर वो scene होता है Hmm. केमी के Hmm. साथ where he confesses that it's not हाँ actually like he didn't kill, but now no one will believe hmm. you because everyone thinks that he's a हाँ monster. So I think hmm. that Hmm. aspect is very important to show that okay, yes, Damon is a monster, but मतलब वही कि there's a very fine line between making एक villain को और एक इसको. And भाई Jamie is the Hmm. textbook example. You have him Westeros में. Go and see. So like he हाँ is that villain character जिससे सबको ही चिढ़ता है. Nobody sees him in a good light hmm. except for the audience हाँ and Tyrion and Brienne, right? Only these or yes hmm. Cersei तो चलो she's complicated in her own ways. I'm not counting her. But Tyrion और Brienne के Hmm. अलावा nobody in the world in that world knows who actually Jamie knows is. hmm. So like but the audience know, and that's why he becomes this amazing character, and like he has this fan following. So अभी Damon के साथ you have to show that Rhaenyra knows who he really is. But Hmm. okay, I think Hmm. Rhaenyra knows that अभी तक. But I think Hmm. children के साथ भी there has to be that emotion. वो कहीं पे भी नहीं है. ना Aegon और Viserys के साथ, ना इसके साथ. मतलब चलो जेक और लूक तो अलग ही हो गए, बट स्टिल अभी Hmm. पता है मतलब अभी आई नो राइट अभी आई थिंक एवरीवन नोज सो डेमन Hmm. विल हैव दिस डेमन विल डू समथिंग अबाउट लूक्स डेथ राइट एंड आई थिंक दे कुड Yeah, हैव yeah, मेड yeah. इट अ वेरी अमेजिंग लाइक वो बहुत Poetic वाला awesome बन hmm. था अगर they could have Hmm. shown this one scene between Damon and Luke, like Hmm. Abhi, like everyone is like he's only doing it for power. He has no emotions for Luke. He has no emotions for Rhaenyra. He's only doing it because he wants to Hmm. be, he wants the Hmm. throne. Plain explain. He Yes, in हाँ these मे भी हो moments he सकता has था to वो जो explain it to your ड्रैगन audience. हाँ मेरे को लगता है अगर जेस की जगह अगर लूक वाले के साथ थोड़ा सा दिखा देते जो वो ड्रैगन वाला सीन हुआ था ना उनका ड्रैगन वाला सीन. जो लास्ट में वो बताता नहीं है डेमन की मैं अच्छा दिखाता हूँ कि लॉयल्टी क्या होती 10th एपिसोड. हाँ लूक का एक है सीन है हाँ बस when लूक को हर्ट होता है एंड 6th एपिसोड में. So लूक इज जस्ट लुकिंग एट डेमन लाइक अभी ये कौन आया. तो लाइक वो सेवेंथ हाँ एपिसोड में जब वो अटैक करती है एंड वो ही इज हाँ वॉचिंग द हाँ शो एंड एंड में कम्स नेक्स्ट टू रेनेरा. हम्म, तो तभी लूक हाँ सीज. हाँ हाँ आई हाँ थिंक आई डोंट नो मतलब आई थिंक हाँ कहीं कहीं पे कुछ चीजें आई एम नॉट सेइंग मेक हिम पूरा ही इमो ही इज नॉट दैट पर्सन. ही हम्म, कैन नॉट बी दैट पर्सन. बट हम्म, बट कुछ तो बॉन्डिंग दिखाओ उसकी बच्चों के साथ. लाइक आई हम्म, थिंक रेनेरा के लिए दे हैव डन अ गुड जॉब लाइक वो उसकी हाँ बॉन्डिंग दिखाने में. बट यस यस इसमें but it's missing with his children, which is weird, and which is especially हाँ weird because ट्रू ट्रू there's something which will come up next. Yeah, हाँ थोड़ा सा तो लाइक देयर आर लूप they're होल्स trying काफी to make ज्यादा him है बट more of a लेट्स सी villain character. हम्म मतलब अच्छा, I'll ask you this. Like, you had no opinion on Damon before watching the show. So, like, if you have to tell, like, whether how you see him, whether as a villain or as a हम्म hero or as not obviously as a hero, हम्म but like, where हम्म do you see him? लाइक शुरू में तो लाइक ऑफ कोर्स ही वाज द विलन मतलब मेरे लिए लाइक कि मतलब
what does he want? Why is he asking for attention? Like, and then when he goes for the war in the triad, like he doesn't want Viserys ka help. Like, I was all confused. Like he's a bad person. मतलब उसमें बहुत ज़्यादा वो attitude है कि बस वही है, वो वाली feeling आ रही थी. And then gradually as the show went on, और फिर जब वो रेनेरा से बात करता है ना, when they before they marry, कि मतलब वो उसको बताती कि मैंने कोशिश की थी लेनोर के साथ बट इट डिडंट हैपन. तो लाइक सिंपैथेटिक, मतलब थोड़ा-सा था ना कि वो समझता है उसकी बात एंड इज़ नॉट ऑल लाइक एवरीबॉडी एल्स कि इल्लेजिटिमेट हैं या बास्टर्ड्स हैं व्हाटएवर. तो मतलब उस टाइम ऐसा लगता है कि ना, ही अंडरस्टैंड्स एंड व्हेन she says कि we are meant to burn together. तो That scene was like nice. cute and हाँ, मतलब वो वाला सीन बहुत ही क्यूट होता है. And then और फिर उसके बाद like मतलब villain and then like a hero like मतलब with the bad side too. Like if anything or anyone does wrong with his family, he has to like be a evil to them. वैसा वाला हो गया था फिर उसका So, trajectory so मेरे you लिए. also see him But as a हाँ, but gray मेरे character now. हुँ। हाँ, हाँ। तो वही वही हुआ था एंड पर मेरे को इतना नहीं पसंद आया था डेमन की, मतलब कि जैसे मैं आई एम फॉलोइंग हिम ऑन एवरीथिंग, वैसा नहीं था मेरा. आई वाज़ ऑन इतना जैसे रॉब स्टार्क के साथ आई वाज़ हियर, तो लाइक डेमन के लिए आई वाज़ हियर एंड Less Jamie for आफ्टर you? वॉचिंग जेमी फॉर यू, मतलब जेमी मेरे को ठीक लगता था, मतलब वो इतना यहाँ पे अच्छा. मतलब रॉब स्टार्क से लाइक एक लेवल नीचे था. एंड Mhm. देन डेमन का जब मैंने ट्विटर एंड एवरीथिंग आई सॉ, मतलब वो थोड़ा सा ऊपर आ गया इतना सा. लाइक नाउ आई अंडरस्टैंड Ah, आफ्टर सीइंग द डिलीटेड सीन्स एंड आफ्टर रीडिंग लाइक exactly. बुक्स में कैसा है. हाँ, तो वो थोड़ा फिर ऊपर आया I मेरे think, लिए, नहीं तो शो में तो लाइक हाँ, हाँ. I think they did a good job. मतलब तुम बुक भी पढ़ोगी ना तो you like वो ना मतलब हिस्ट्री के हाँ. context से you know that you want to know more about this character, right? Like he has that factor हम्म. in him that तुमको लगेगा यार मतलब I want to know more about him. But and show हम्म. में I think they've conveyed it nicely. I don't have a problem अभी तक. Only like obviously वो हक scene delete नहीं करते तो I would have been more happy. But Yes. मतलब I think they've done a good job. But I don't know. मतलब maybe I after reading some of ये कुछ writers की चीज तो I became थोड़ा skeptic कि हाँ, पता नहीं how they'll take his इमोशनली character इन्वेस्टेड. forward, right? Like they might हाँ, destroy him जैसे जेमी को किया तो. But I still हाँ क्योंकि यार. इसमें मार्टिन is involved अभी तक. He is the ओह. executive producer, so he knows what's happening. And I don't think so. The writers are also, matlab, they are also obviously they are the writers, right? They're creating the show, so they're talented and they understand. Like हम तो ठीक है, हम थोड़े ज़्यादा invested होते हैं, but we have a different life, right? Like we work and all. बात कर यार. लेंगे, हाँ, थोड़ा बहुत सही ये कर बात. लेंगे, but हुँ. that's their job. So they have to understand हुँ. it in a more, and I do think that they do understand him in a much better way than we can ever do. But obviously, like as an हुँ. audience, you have some expectations. हुँ. So let's see. यार. हुँ. चलो, we'll wrap up and I have some Right. errands to run, I guess. सही बोला Okay. मैंने. Right. It's already तो हाँ. हाँ, And अभी तो already 1.5 घंटे तो फिर हुए अपने लाइक को. यस यस. और अगर इसका पार्ट 2 भी बना देंगे इफ यू वांट टू लाइक डिस्कस मोर अहेड, मतलब आफ्टर आई रीड बुक मे बी वी कैन डू दिस बुक वाला कर सकते हैं हम लोग. एंड Sure, देन sure, sure. टिल देन वील कम अप विद मोर एपिसोड्स, बीच में कुछ भी हम तो किसी भी चीज पे बात कर लेते हैं. And that's all. We'll keep you entertained and posted about our new podcast. I hope you like this podcast, and I hope Garima mama को अच्छा लगा यहाँ आके. And thank you for taking Oh, out time. obviously. हाँ. Obviously. चलो And ठीक है. like I'm very grateful that we have one last thing that like like we have Westeros again in the table, right? Like on the Hmm. table that we can Hmm. discuss Westeros again. Yeah, that's good. Yes. Right. Chalo. चलो ठीक है. I'm ending the broadcast. Bye. Bye bye.